हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम बलराम लीला दास प्रभुजी and Braj Prakash Prabhuji. Hare Krishna, Dharma Pranam Prabhu. Dharma Pranam Balaram Lila Prabhuji. We are just waiting for devotees to join in, and just a couple of minutes will start, Prabhu. Still devotees are tuning in, so just a couple of minutes. Hare Krishna, Dharma Pranam. Welcome to all the devotees. Asiman Krishna Prabhu, just starting now. So we'll just briefly introduce Prabhuji and then we'll start the session. तो आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं. We are very, very fortunate to have with us His Grace Balaram Lila Prabhu. And I'm also seeing we have Sundar Gopal Prabhu. And even BRC Kolkata I'm able to see here. So all these devotees are welcomed. And we are very, very fortunate to have the association. हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सबको भक्ति वेदांत सेंटर से साक्षात इन सभी प्रभु का संग प्राप्त हो रहा है. एंड स्पेशली बलराम लीला प्रभु जी, उनका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं हृदय से. वी आर वेलकमिंग प्रभु जी फॉर गिविंग दिस इनसाइट अबाउट दिस बीआरसी एंड द प्रिजर्विंग द लिटरेचर ऑफ आवर स्पेशली द गौड़ी वैष्णवस. तो जस्ट फॉर द डिवोटी बेनिफिट आई विल गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रभु जी. His Grace Balaram Lila Prabhu, he's a disciple of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, and he did his M.Tech from IIT, a very prestigious institute, IIT Bombay, in 1998, and then Prabhu moved to US in year 2000. 2000 में वो अपनी पढ़ाई M.Tech IIT से करने के पश्चात वो अमेरिका में चले गए वहाँ पर, और वहाँ पर फिर वो बहुत सौभाग्य से उनको सिएटल टेम्पल में 2002 वहां से उनको संग प्राप्त होना शुरू हुआ. So was fortunate to connect with the Seattle Temple in the year 2002 under the leadership of Srila Prabhupada's disciple and local GBC, His Holiness Hari Vilas Maharaj. So परम पूजनीय हरि विलास महाराज के वहां पर निर्देशन में उनको वहां पर भक्तों का संग प्राप्त हुआ. And he served there primarily in the field of education. तो वहाँ पर प्रभु ने काफी अपनी सेवाएं दी वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में. And he was fortunate to receive initiation from the Maharaj, Radha Swami Maharaj, in year 2007. And then in 2017 he moved back to India from US. तो वापस भारतवर्ष में 2017 में प्रभु जी वापस आए. And since then he has been serving in administration and development at Bhaktivedanta Center. और तब से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं. भक्ति वेदांत ये जो अनुसंधान केंद्र है कोलकाता में, वहां पर प्रभु सेवाएं दे रहे हैं. एंड वी वर वेरी फॉर्चुनेट टू हियर लॉट ऑफ ग्लोरीज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, दिस सेंटर फ्रॉम हिज ग्रेस आराध्य भगवान प्रभु, जो यहाँ पर अभी आए थे और आज ही वो भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किए हैं. तो उससे हमने काफी इसके बारे में श्रवण किया था. एंड हिज ग्रेस असीमान कृष्णाम प्रभु फ्रॉम कन्यादेश, ही रिसेंटली ही विजिटेड the center, and also he had a very wonderful association of Prabhuji and Sundar Gopal Prabhu and the devotees there. तो हमारे श्रीमान कृष्ण प्रभु जी को बहुत सुंदर संग वहाँ पे प्राप्त हुआ था.
और हम सभी भक्त उत्साहित हैं वहाँ पर जाकर के एक बार सब कुछ देखने के लिए भी, दर्शन करने के लिए भी, और हमारे उत्साह को और बढ़ाने के लिए श्रीमान बलराम लीला प्रभु जी ने आज हमको और सुंदर रूप से इसके बारे में और गहन बताएंगे, जिससे हम सब उत्साहित हों इस सेवा करने के लिए और यहाँ पर जाकर के दर्शन करने के लिए भी. So with this little background, let's welcome all together His Grace Balaram Lila Prabhu and all the devotees from Kolkata जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं. हम उन सबका स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का आशा लेते हुए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. Asiman Krishna Prabhu would like to something, or will start? I think Prabhuji can start because they given a brief introduction, and because Balaram Lila Prabhuji is there, because he will, I think, give more insight than me. Okay. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna, Balaram Lila Prabhuji. So over to you, Prabhu. Please, Prabhuji. Prabhu, just one request, Prabhu, because we have a crowd, mixed crowd actually. तो जो लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को हमको बीच में बोलना पड़ेगा, प्रभु जी. हाँ. Thank you, Prabhu. Thank you so much. Over. Hare Krishna. Thank you so much, Asimanand Krishnanam Prabhu, and all the wonderful devotees. I just heard that there's been a change in the, let's say, the United Nations. There, one of the, already I think a few of the nations have been renamed now, and one of them is Kanhaiya Desh, no longer being referred to as what we used to think of as Kuwait, and that was really a wonderful, inspiring. And then especially even more related when I heard that the renaming was done by none other than an eternal associate of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. So that was absolutely wonderful to hear. And I was just talking to Asimanand Prabhu, and Prabhu gave me a promise that he's going to share with me all of these new namings, which I think should be broadcasted on the internet so that people all over the world, why just ISKCON? People all over should be utilizing these correct names of these wonderful nations. So thank you very much again for inviting me, and I hope you are able to hear me okay, first of all. Yes, Prabhu, very clear, Prabhu. Okay, yeah. And we'll be very happy to have the recording also later on. So the way we will do it, Prabhuji, the session is I'm going to do an overview presentation of the BRC, and after that, with your kind permission, we will also make a video walkthrough under the leadership of Sundar Gopal Prabhu of the Bhaktivedanta Research Center, Kolkata Library, for you to see some of the rare gems of our things. And then obviously if any discussion after that, any thoughts or guidance, we'll be very happy to take that also. All right. Okay. So let's move on. So as I was told, this is the Srimad Bhagavatam class. So first of all, offer my obeisances to His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Om Vishnupad Paramahams Parivajikacharya Astodara Sri Srimad. His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada Ki Jai. So I thought we will start off with this verse. It's here. It's the Paramatra Namo Vishnu Padaya Krishna Krishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatari Gyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Acharya Sagadadhar Pandit Shivas Pandit Adi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you very much again, Prabhu. So I thought we will take up this verse in the Jamil episode in Srimad Bhagavatam, when Jamil took the name of the Lord while he was calling for his son, but he took the name of the Lord. At that time, there was a competition, a fight between the Vishnu Dutas and the Yamadutas. And when they caught him at that time, Yamaduta was about to take him, but Vishnu Dutas stopped. And that time, Yamadutas asked them, "Who are you? You look so beautiful, all the four Vishnu Dutas." At that time, Vishnu Dutas said, "You cannot take him. First, you have to explain to us about what are the religious principles that you follow. What is your basis of doing what you are doing? What are the religious principles you follow?" It's a very interesting verse. This verse is spoken by the Yamadutas. Well, but we shouldn't think that just because it's spoken. Oh, sorry, मैं English बोलने लगा, हिंदी में बोल रहा है. So ये जो श्लोक बताया गया है, सॉरी, अजामिल के एपिसोड में है. और अजामिल ने जब भगवान का नाम लिया तो यमदूत और विष्णु दूतों में एक कंपटीशन सब हुआ. उस समय यमदूतों से विष्णु दूतों ने पूछा कि आप बताएं कि आप किस विधान के हिसाब से, किस धर्म के हिसाब से आप कार्य करते हैं. आप ये कार्य कर रहे हैं अजामिल को लेके जाने का, तो किस बेसिस पे आप कर रहे हैं इस चीज को. तो यमदूतों ने इस श्लोक से जवाब दिया था. ये श्लोक क्या है? यमदूता उचुहु वेद प्रणहितो धर्मो अधर्मा हि विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभू इति शुश्रुमा. तो यहाँ पर इसका बहुत ही एक तरीके से साधारण संस्कृत है, लोग समझ सकते हैं. वेद प्रणहितो धर्मो, तो यमदूतों ने जवाब दिया कि जो वेदों में लिखा हुआ है वही धर्म है. धर्म उसके अलावा और कुछ नहीं, जो वेदों में लिखा हुआ है वो धर्म है. अधर्मास तद विपर्ययः, जो भी वेदों में नहीं लिखा गया है वो अधर्म है. यधर्मास अधि, जो वेदों के खिलाफ है, जो वेदों के अगेंस्ट है वो अधर्म है. वेद ही साक्षात नारायण है, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभुर इति शुश्रुमः. और वेद जो है वो सेल्फ बॉर्न है, मतलब आत्मभू है जैसे, या सेल्फ सफिशिएंट भी प्रभुपाद कह रहे हैं. मतलब वेदों के अलावा और किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं. और वेद जो है वो भगवान की श्वास से ही आए, भगवान की ब्रीदिंग से आए. मतलब वो अपौरुषेय है, किसी ने लिखा नहीं उन्हें, कि कोई मनुष्य ने लिखा हो, बल्कि वो भगवान की ब्रीदिंग से आए हैं. ये हमने सुना है. किससे सुना है? यमदूत, मतलब यमराज से. तो यमराज तो हमें पता है कि महाजन है. तो जब महाजन ये कह रहे हैं तो उसको फॉलो करना होगा. तो हम लोग देख सकते हैं कि सारे जो धर्म का जो बेसिस है वो वेद ही है. तो वेदों की रक्षा करना, इस संसार की रक्षा करना है. इस संसार को अगर हमें अंधकार से बचाना है तो वेदों को ही बचाना होगा, वरना और कोई विज्ञान है ही नहीं इस दुनिया में. तो ये चीज जो है, इसको देखते हुए हम लोग, मैं आपको कुछ इसमें कवर करूंगा भी, है कि लोग चाहते हैं कि काम मतलब फैसिलिटी एंजॉय किया जाए. लोग चाहते हैं कि पैसा, जो कि एंजॉय करने के लिए पैसा चाहिए तो अर्थ चाहिए. लेकिन ये सब अगर धर्म पर आधारित नहीं होंगे, काम और अर्थ अगर धर्म पर आधारित नहीं होंगे तो वो कभी टिक नहीं सकते. ये तो हम लोग जानते ही हैं. और फिर मोक्ष कैसे मिलेगा और प्रेम कैसे मिल सकता है? तो ये एक सीढ़ी है. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि धर्म किस चीज पर आधारित है? तो धर्म आधारित है शास्त्रों पर. यही तो इस श्लोक ने कहा
वेद प्रणहितो धर्मो वेदो नारायण साक्षात। तो अगर शास्त्र आपने हटा दिया तो धर्म चला जाएगा, अर्थ चला जाएगा, काम चला जाएगा, मोक्ष और प्रेम तो मिल ही नहीं सकता उसके बिना। यही भगवान ने भगवद गीता में भी कहा, यह शास्त्र विद्यम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अगर आपने शास्त्रों को त्याग दिया तो न सिद्धि मिलेगी, न सुख मिलेगा, न पराम गति मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा शास्त्रों के बिना। बुक्स आर द बेसिस, जैसे प्रभुपाद जी कह के गए। और ये इवन आप आर्थिक रूप से भी इसको देख सकते हैं कि वर्ल्ड जीडीपी का परसेंटेज, इंडिया वाज द रिचेस्ट नेशन, 1/3 of the world's GDP in 0 AD was India. 33% GDP इंडिया का था। ये भारत के किसी ने नहीं लिखा, ये विदेश मतलब कि पाश्चात्य किताबों में लिखा गया। ये आज भी विकिपीडिया पर है कि इंडिया परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। आप विकिपीडिया पे सर्च करें आपको ये मिलेगा। लेकिन ये परसेंटेज कम आता गया मुगलों के समय और फिर अंग्रेजों के समय तो बिल्कुल ही नीचे चला गया, आज 4% पर है, 33%। दिस इज द एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स। ये टेबल जो है विकिपीडिया से लिया गया है, फ्रॉम कॉन्टोर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रॉम 1 AD टू 2030 AD। लेकिन ये हुआ कैसे कि भारत जो इतना इकोनॉमिकली डेवलप्ड या हर तरीके से सबसे ऊंचा देश था, कैसे इतना नीचे गया? ये किया है लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम ने खासकर, क्योंकि एजुकेशन जो इंडिया में था, उन्हें पता था कि इन्होंने बताया कि अगर मैंने इंडिया और सारे इंडिया में ट्रेवल किया, लेकिन हमें इंडिया को अगर एक्चुअली डोमिनेट करना है तो हमें उसके एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, मतलब जो इसके वेदों का ज्ञान जो सिखाया जा रहा है, उसको हटा दो इस सिस्टम से। तभी वो तभी लोगों में वो आत्मविश्वास जो है इनमें वो खत्म हो जाएगा और हम लोग उसको ट्रूली डोमिनेट कर सकेंगे। उन्होंने लिखा कि आई हैव नेवर फाउंड एनी even a single person who can deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. He is saying कि पूरे इंडिया के लिटरेचर को लेकर आ जाओ, लेकिन हमारे यूरोप का एक छोटा सा शेल्फ भी उससे बहुत अत्यधिक ज्ञान है उसमें। तो इस तरीके से उन्होंने हर तरीके से बाद में इसके बेसिस पर संस्कृत वगैरह हर तरीके, हमें पता है कि नवद्वीप भी कितना बड़ा वो था, नवद्वीप में भी संस्कृत सारे विद्यालय सब बंद कर दिए। हर तरीके से एजुकेशन को खत्म करके ही इंडिया को डोमिनेट किया गया। और तो ये वेद देख सकते हैं, जैसे कितने सारे वेद थे, वेदांग, जिसमें व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और ग्रंथ, यंत्र और तंत्र, पंचरात्र, पुराण, इतिहास, षट दर्शन, ये वो कोई अंत नहीं है वेदों का। मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट को वेदों का ज्ञान टच करता है, लेकिन उसको इस एजुकेशन सिस्टम से हटाकर सारे भारत को ही नहीं बल्कि सारे विश्व को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है एक्चुअली। तो भक्त, इसलिए एक संस्था की जरूरत है, इवन इस्कॉन में भी, क्योंकि इस्कॉन में भी देखिए अब प्रभुपाद जी वापस लेकर आए इन वेदों के ज्ञान को, लेकिन इन वेदों के ज्ञान को प्रभुपाद जी जब लेकर आए, क्योंकि अंग्रेजों ने तो हटा दिया मंदिर से उसको, अब प्रभुपाद जी ने मंदिरों में उसको लेकर आ गए। लेकिन अब हमें चाहिए कि ये जो ज्ञान है सिर्फ मंदिरों में ही नहीं रहे, बल्कि वो फिर से हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आ जाए। तो इसलिए इसकी कोशिश कर रहे हैं भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर कि फिर से इस ज्ञान को हम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसे लाया जाए जैसे कि पहले के जमाने में बिल्कुल था। तो ये भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर का ये है कि भक्ति वेदांत सेंटर एक श्री श्री शास्त्र मंदिर है। जैसे श्री श्री राधा माधव मंदिर होता है, वैसे ये श्री श्री शास्त्र मंदिर है। और हमारा मिशन यही है कि हम कलेक्ट, प्रिजर्व, रिसर्च करें हमारे शास्त्रों को और टीच करें हमारे शास्त्र को, जिससे कि, और उसको हाईएस्ट और बेस्ट तरीके से कराएं, जिससे कि अगले 10,000 साल तक इस चीज की स्थापना हम कर पाए। सो ये हमारे 4 मिशंस हैं। तो हम लोग टॉक करेंगे, हम लोग बात करेंगे अपने हमारे डिवाइन इंस्पिरेशंस के बारे में, हमारा इंस्पिरेशंस क्या है। और क्योंकि प्रभुपाद जी ने, भक्तिवेदांत ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने क्या कहा है, जो सेवा ये शास्त्रों की चल रही थी, इन शास्त्रों को हमें बचाना है। क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी ने बुक्स लिखी, लेकिन प्रभुपाद जी की बुक्स जो भी बहुत पुराने आचार्यों की बुक्स के बेसिस है, तो उन आचार्यों की बुक्स और पुरानी बुक्स को बचाना भी उतना ही जरूरी है
जितना कि प्रभुपाद की बुक्स को, उसी के बेसिस पर ये मूवमेंट एकदम स्ट्रांगली एस्टेब्लिश रहेगा आगे के समय तक। वरना लोग सोचेंगे कि जैसे कोई और गुरु लिख रहा है वैसे प्रभुपाद ने लिखी, लेकिन प्रभुपाद ने तो वेदों के ज्ञान को, पूरे आचार्यों के ज्ञान को निचोड़ कर डाला है। उस चीज को स्थापित करने के लिए हमें सारे गौड़िया वैष्णव समाज के बुक्स को संभालना होगा। तो ये इसका इंस्पिरेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, और फाइनली हाउएवर यू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, किस तरह से आप इसमें शामिल होना चाहेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। एक बार मैं शेयर करने, तो ये प्रभुपाद जी विजिट कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे को, ललित प्रसाद ठाकुर, भक्तिदान सरी ठाकुर के भाई, वीरनगर, जहाँ पे प्रभुपाद जी, यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म हुआ था, तो वहां पर उनको विजिट कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर की ओरिजिनल बुक्स देखी, तो प्रभुपाद ने क्या कहा, द पेजेस आर इन वेरी डिक्रिपिट कंडीशन, दे मे बी प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशंस ऑफ वैष्णवस टू सी द एक्चुअल हैंडराइटिंग एंड वर्ड्स ऑफ सच ग्रेट सेंटली पर्सन्स। तो ये चीज को हम लोग देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें इन पुरानी भक्ति विनोद ठाकुर की ओरिजिनल राइटिंग्स वगैरह जो आप देखेंगे आज भक्ति, उनको हमें बचाना होगा, जिससे कि आगे जाकर कन्हैया देश के सारे भक्त उनको देख पाए। ये प्रभुपाद जी ने उसी समय कह दिया था कि हमें फ्यूचर जनरेशन ऑफ वैष्णव शुड सी द एक्चुअल हैंडराइटिंग्स, ट्रीट दिस मैटर वेरी सीरियसली एंड थरोली, बहुत सीरियसली लीजिए इस बात को, एंड टेक ऑल प्रिकॉशंस टू गार्ड दीज, व्हाट इज दैट एक्सपेंस। इसके लिए अगर हमें कुछ भी खर्च करना पड़े तो करें, क्योंकि हमें हमारे पूरे आचार्यों की पुरानी बुक्स को संभालना है। और उसी टाइम पे बात कर रहे थे कि उसको फोटोग्राफ करें, और इसे प्राइस बहुत वेरी वेरी प्राइस है, ग्रेट ट्रेजर हाउस ऑफ वैष्णव रोड, सो वी हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस टू गार्ड दीज। तो ये पहली बात है कि हमें हमारे पुराने शास्त्रों को बचाना है, प्रिजर्व करना है। तो ये भक्तिदान सर हम लोग कैसे कर रहे हैं ये आपको दिखाएंगे आगे। रिसर्च के बारे में बात करें तो प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, आज से 100 साल पहले एक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया था, ठाकुर भक्ति विनोद रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो ओरिजिनल पेपर है BRC में पड़ा हुआ है, ठाकुर भक्ति विनोद रिसर्च इंस्टीट्यूट का। राइट, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भक्ति विनोद, ये आप स्टेटमेंट देखिए, शायद किसी को पता नहीं होगा, ये स्टेटमेंट भक्तिदान सरी ठाकुर ने दिया है कि अगर मैंने वैष्णव मंजूषा इंसाइक्लोपीडिया वैष्णविज्म नहीं पूर्ण किया, फॉर दिस अलोन मैं फिर से इस भौतिक जगत में आऊंगा, फिर से भौतिक जगत में आऊंगा, अगर उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया वैष्णविज्म नहीं किया तो। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट हमारे परम आचार्य ने दिया है। और उन्होंने 1936 में अपने इस शरीर को त्यागने से पहले, मतलब कि गोलोक वृंदावन जाने से एक दिन पहले उन्होंने ये चीज लिखी कि अपनी लास्ट विल, इसका ओरिजिनल कॉपी आपको दिखाएंगे। ये ओरिजिनल कॉपी उनकी वसीयत की भक्तिदान रिसर्च सेंटर में पड़ी हुई है। उसमें पहला आइटम क्या है, सुंदरानंदा टू एडिट मंजूषा। इसका अर्थ है सुंदरानंदा जो उनके एडिटर थे, उनको उन्होंने कहा कि भाई तुम मंजूषा को खत्म करना, जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म जो है। तो हम लोग देख सकते हैं, अगर आप अपनी वसीयत में पहली चीज किसी को लिख रहे हैं, पहली चीज, मतलब आपके जहन में अंदर कितनी उसका महत्व होगा कि ये एनसाइक्लोपीडिया, मतलब ये रिसर्च का काम है, एनसाइक्लोपीडिया बनाए गौड़िया वैष्णविज्म का। तो आपको बताकर ये खुशी हो रही है कि भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर ने सबसे पहला प्रोजेक्ट ये लिया था, सुंदरानंदा ये एनसाइक्लोपीडिया बनाने का, और वो अभी भी चल रहा है, और वो एक्चुअली और कुछ सालों तक चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया हम लोग बनाने के लिए कर रहे हैं। और आप देखिए एकेडमिक इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर एकेडमिक इंस्टीट्यूट है। प्रभुपाद जी कहकर चले गए हैं कई बार कि हमें सिर्फ मंदिरों में नहीं पढ़ाना, हमें मास्टर्स PhD डिग्री देनी है यूनिवर्सिटीज को के साथ एफिलिएट करके। तो ये दो आपको चीज प्रभुपाद जी की वाणी सुनाएंगे यहाँ पर, तो देखिएगा, आपको ये आवाज सुननी चाहिए। A degree recognized by the state of California, so they can teach in universities all over the whole country. That I want. Do it. Yes. We want to give degrees, at least BA, MA and PhD, according to the advancement of knowledge. और अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर एक, सिर्फ मायापुर में नहीं एफिलिएट करें, हर जगह सारे विश्व में मंदिरों को यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करना चाहिए।
Srila Prabhupada, in Mayapur, you were speaking about you wanted Mayapur to become a college with the University of Calcutta. Why Mayapur? Everywhere. The whole educational system should be changed. We should take Not it over. change, at least this will remain as a departmental law. Yes. तो अब आप देखेंगे तो हार्डली एनी यूनिवर्सिटी, मुश्किल से कोई जगहों पर हम हमारे मंदिर यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होकर और कॉलेजेस में और वगैरह हम लोग मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम बैचलर प्रोग्राम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो ये जो इच्छा है हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद की, ये पूर्ण नहीं हुई है अभी तक। इसीलिए आप आगे जाकर देखेंगे कि लोग, बहुत सारे प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने कहा कि ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोगों का अभी भक्तिविधान रिसर्च सेंटर इंडिया में 5 जगहों पर है और बाकी भी बाहर भी अलग अलग इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड है। हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी मुंबई में चल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से भी हम पुणे से भी एफिलिएटेड है, जहाँ पे एक रिसर्च सेंटर के रूप में हम एफिलिएटेड है। कलकत्ता में तो हमारा हेडक्वार्टर्स है ही, जगन्नाथपुरी में भी है, वृंदावन में भी। तो ये 5 जगहों पर है। हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, कोलकाता सोसाइटी फॉर एशियाटिक स्टडीज, गॉथनबर्ग यूनिवर्सिटी। सो मेनी यूनिवर्सिटीज के साथ में हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स और एफिलिएशंस किए हैं। और अब आपको बताते हैं थोड़ा बहुत लाइब्रेरी के बारे में हमारे। तो जस्ट एक बता दें, अगर आप लोग, शायद लोगों को नहीं पता होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी आज से 1000 साल पहले 1200 इन 12th सेंचुरी नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, इट हैड ए लाइब्रेरी जहां पे 90 लाख 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, 10,000 स्टूडेंट, 2,000 टीचर्स और 3 मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स थी वहां पर। और उस क्या हुआ उस लाइब्रेरी का? उस लाइब्रेरी को बख्तियार खिलजी, जो वहां पर उस समय उन्होंने वहां पर हमला किया, बख्तियार खिलजी ने उस लाइब्रेरी को जला दिया उस लाइब्रेरी को। और ये हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है, बताया गया कि 3 महीने तक धुआं निकल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि देयर इज अ पर्पस कि वो उसको जला रहे हैं। चाहे तो रख सकते थे, क्या हो जाता, लेकिन उन्हें पता है कि अगर ज्ञान बचा रहेगा तो हम इन लोगों को कॉन्कर नहीं कर पाएंगे, तो ये इनका ज्ञान नष्ट करना होगा। इसी, और अभी भी वही चल रहा है। मैन्युस्क्रिप्ट्स इन इंडिया कहते हैं कि शायद 4 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट हो, लेकिन ओनली 10% हैव बीन इवन डिजिटाइज्ड। 90% ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन इंडिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन इन द होल वर्ल्ड। 90% ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीसीज की बात करते हैं, सबसे बड़ा तो ये है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पांडुलिपियां, वही नष्ट हो रही है। और गौड़िया वैष्णव मैन्युस्क्रिप्ट्स 45% जो है वो हमें मिल नहीं रही। 45% नोन बुक्स आउट ऑफ 800 नोन बुक्स ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म नहीं मिल रही, और लेस देन 20% ट्रांसलेट हुई है। तो ये हम लोग देखते हैं रेड, येलो, ग्रीन। रेड मतलब जो बुक्स मिल ही नहीं रही, 316 बुक्स, 238 बुक्स जो डिस्कवर हुई हैं लेकिन सिर्फ ओरिजिनल लैंग्वेज बंगाली में है, और 142 ही सिर्फ ट्रांसलेट हुई है। तो गौड़िया वैष्णव आचार्य की ही हमारे पास इतनी कम बुक्स हैं, तो हम किस बेसिस पर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारे स्कॉलरशिप का एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि बताया जाए कि गौड़िया वैष्णव इज द हाईएस्ट फिलॉसफी इन द वर्ल्ड। हमारी बुक्स ही खो चुकी है। तो अगर हम लोग अभी भी जोर लगाएं, मेहनत करें, तो हम इतने इसमें से काफी बुक्स को बचा सकते हैं, फिर उनको और रीप्रिंट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिससे कि ये सारे यूनिवर्सिटीज वगैरह में अवेलेबल हो। इसका हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, यहाँ पर रेड, येलो, ग्रीन जैसा आप देख रहे हैं। तो ये हमारे वेबसाइट पे बनानी है। और ये इस भक्तिदान सोई ठाकुर की पर्सनल लाइब्रेरी है, 2380 बुक्स की, 70,000 प्लस पेजेस ऑफ जर्नल्स दैट वी हैव ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भक्तिदान सोई ठाकुर की पर्सनल लाइब्रेरी है। 2380 बुक्स इसमें थी, जो ओरिजिनल लाइब्रेरी जो उन्होंने खुद ने छुई है, मोर देन 100 ईयर ओल्ड लाइब्रेरी। ये भगवान की कृपा से, हमारे फाउंडर प्रणवा प्रभु, हरीश्वरी प्रभु, इन लोगों की बड़ी मेहनत की वजह से ये लाइब्रेरी जो है वो आज भक्ति विधान रिसर्च सेंटर कलकत्ता में है, जिसका दर्शन असीमानंद प्रभु ने भी किया था अभी इस बार जब आए थे। तो ये है सुंदरानंद विद्या विनोद। यहाँ पे बहुत सारे 28 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल्स हैं। इनमें आपको मैं एक जर्नल के बारे में बताता हूँ, डेली नदिया प्रकाश। ये एक डेली न्यूज़पेपर चलता था, डेली न्यूज़पेपर। आज इस्कॉन में भी किसी ने स्थापित नहीं किया डेली न्यूज़पेपर। 20 साल तक डेली न्यूज़पेपर चलाया
गौड़िया मठ ने 1927 से 1947। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40,000 प्लस पेजेस, 8 पेजेस पर इशू, 5,000 प्लस इश्यूज पब्लिश फ्रॉम 1927 टू 1947। इसको हम लोगों ने फिजिकली प्रिजर्व किया, डिजिटली प्रिजर्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी जो थे और पर्सनल सर्वेंट इसके हरीश्वरी प्रभु जो हमारे को फाउंडर हैं, उन्होंने उनके होल्ड करके रखे। ऐसी हालत थी नदिया प्रकाश के काफी पेजेस की, और बड़ी मेहनत करके कम से कम 20-25 लाख रुपए लगाकर 2 साल मेहनत करके एक एक पेज को डिजिटाइज किया गया और एक एक पेज को लैमिनेट किया गया है जापानीज टिश्यू पेपर में। ये आप देख रहे हैं एक एक पेज को पूरी टीम मिलकर मैंने लैमिनेट कर रही है। ये जो हाल था लेफ्ट में बिफोर और राइट में आफ्टर। तो ऐसे करके पूरे 40,000 पेजेस के जर्नल्स डेली नदिया प्रकाश को बचाया गया है। अब हम लोग ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज के साथ वगैरह में कोलैबोरेट करके इस जर्नल को हम ऑनलाइन एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में डालेंगे, और आगे जाकर जैसे और रिसोर्सेज आएंगे और सपोर्ट आएगा, इन 40,000 प्लस पेजेस को ट्रांसलेट किया जाएगा, जिससे कि ये जो नॉलेज है कैसे गौड़िया मठ भक्तिदास ने स्थापित किया उसको दिखाया, उसको बताया जाएगा। ये बीरनगर कलेक्शन है, भक्ति विनोद ठाकुर का ओरिजिनल बर्थ प्लेस का कलेक्शन है। तो यहाँ पर आप देखते हैं हरीश्वरी प्रभु ने, ये हम लोगों ने एक एक टेस्ट, स्वैब टेस्ट किया है, लिटमस टेस्ट, अलग अलग ट्रिमिंग, बाइंडिंग, लैमिनेशन, एक एक का एनकैप्सुलेशन। ये देख रहे हैं ये एक ओरिजिनल लेटर ऑफ भक्ति ऑफ श्रील प्रभुपाद, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, नवदीप धाम महात्मा ओरिजिनल, ये स्वलिखिता जीवनी उन भक्ति विनोद ठाकुर की ऑटोबायोग्राफी, और ये आपको हम लोग दिखाएंगे ओरिजिनल हैंड रिटन गौर आरती, ये आपको अक्षर दिखाएंगे भी अभी लाइब्रेरी में, ओरिजिनल हैंड रिटन गौर आरती। तो इसको आपको आगे जाकर दिखाएंगे कैसे प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर ने जो जय जय गौरा चंदे आगे जाके ऐड किया, जो ऊपर आपके ग्रीन में डाला हुआ है, और फिर नरहरि आदि कोरी बाद में ऐड किया है साइड में लिखकर। तो ये ओरिजिनल जो जूल्स हैं वो वहां पर पड़े हुए हैं, जगन्नाथ दास जी की ओरिजिनल फोटो वगैरह। और ये मैन्युस्क्रिप्ट मिशन हम लोग अलग अलग जगहों पर गए हैं, गाँव में गए हैं पिछले 12 सालों में, और 50 से ज्यादा जगहों पर गए हैं, पुरी, कटक, पटना, जयपुर, वृंदावन, बांग्लादेश, अलग अलग जगहों पर जाके बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को बचाया। और ये कुछ कॉपीज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट आपको दिख रही है जहाँ पे बचाया, उनको रेड पेपर में ऐसा बचा के उनको रेड पेपर में रैप किया जाता है, कैटलॉग किया जाता है। तो ये देख रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स की क्या हालत होती है। मैन्युस्क्रिप्ट्स है ताल पत्र मैन्युस्क्रिप्ट, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं गौरांग टोल नवदीप मंदिर, यहाँ पर ये जो होल्ड करके रखे हैं, इस मैन्युस्क्रिप्ट में चैतन्य महाप्रभु की ओरिजिनल हैंडराइटिंग है, महाप्रभु की ओरिजिनल हैंडराइटिंग को होल्ड किए हुए हैं ये उसमें। उसको हम लोगों ने जाके डिजिटाइज किया और उसकी एक कॉपी आपको दिखाएंगे। ये महाप्रभु की ओरिजिनल हैंडराइटिंग है, उसको जिंक प्लेट पे हमने एनग्रेव भी किया है ऊपर। तो ये इस चीज को हम लोग, ये है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारी टीम है, काम कर रही है गाँव में जाकर मैन्युस्क्रिप्ट्स को बचाने का। ये बांग्लादेश में हम लोग गए थे, बांग्लादेश में देखिए मैन्युस्क्रिप्ट्स की क्या हालत है। ये एक बांग्लादेश में एक हिंदू पाठशाला है, ईश्वर पाठशाला, देखिए वहां पर अलग पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, हैंडमेड पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, क्या हालत है इन सब की। इन सब को बचाने के लिए हमें कुछ आगे बढ़कर कदम उठाने होंगे, वरना कब पता कब ये नष्ट हो जाए, आप कुछ नहीं बोल सकते। ये कब इनको हटा दिया जाए, कब इनको जला दिया जाए, किसी को कुछ पता नहीं। और यहाँ पर सुनाओ यू कैन सी, ये ओडिशा, नवदीप मध्य, ऐसे ही अलग अलग जगहों पर हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट जाके बचाए। हरे कृष्णा। ये देख रहे हैं अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स, ऐसे थी पहले, बाद में उनको ऐसे बचाया गया। आई होप यू आर, आप लोग इस प्रेजेंटेशन में हम लोग आपकी सेवा कर पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है देखकर? Yes, Prabhuji, yes, it's very... Because when I do it remotely, there कोई feedback नहीं आता, इसलिए कुछ पूछना पड़ता है। Very, very inspiring. Okay. So then we also do a lot of conferences. So this is a conference on manuscriptology जो हमने किया था। हम लोग बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इनके बारे में बताना चाहेंगे तो
एक दो हफ्ते तो इसमें लगा सकते हैं हम लोग, घंटों की क्या बात है। लेकिन मैं आपको कुछ एक ही मिनट में जस्ट बताऊंगा कि बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं। ये हमारी बुक अभी पब्लिश होगी कि जगन्नाथ जी के की जो पटचित्र होते थे, वहां की जो पेंटिंग्स हैं, उनके बारे में हम लोग एक बुक छाप रहे हैं। जगन्नाथ जी के रिसर्च करके एक पेंटिंग एक बुक छपेगी, पटचित्र इन ओडिशा एंड जगन्नाथ कल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। आप देखेंगे इनके वन ऑफ द ऑथर्स कंट्रीब्यूटर्स इज फ्रॉम द इस्लामिक ट्रेडिशन, डॉक्टर मकबूल इस्लाम, जो जगन्नाथ जी के भक्त है। तो हम लोग अलग अलग इस तरह, बिकॉज एकेडेमिया में आने की वजह से हम लोग अलग अलग समाज, अलग अलग धर्मों के लोगों से भी कनेक्ट करते हैं, और सो इट बिकम्स अ यूनिफाइंग फैक्टर एक्चुअली। और हम लोग ये जो जर्नल्स है नदिया प्रकाश, ये सबको ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज के साथ में ऑनलाइन डालेंगे, सो दैट यू विल बी ऑनलाइन स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी बनेगी उसकी। और मैं ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज के साथ में ये हमारा ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और हम लोग कई बुक्स को पब्लिश कर रहे हैं, जैसे हमने बताया जो भक्तिदान ठाकुर जो चाहते थे वैष्णव मंजूषा एनसाइक्लोपीडिया, उसको हम लोग आउट ऑफ प्रिंट है, उसको रिप्रिंट करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर की गीता पर कमेंट्री है, रसिक रंजन विद्वत रंजन, उनको हम पब्लिश करेंगे। तो अब रिसर्च को मैं ब्रीफली बताऊंगा। तो हमारे कम से एक्चुअली 15 नहीं, अब तो 20 प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं, कई इंटरनेशनल स्कॉलर, नेशनल स्कॉलर्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ में। ये हमारे आपको दिख रहे हैं काफी स्कॉलर्स। डॉक्टर फर्डिनांड सरडेला इस प्रणवा प्रभु, डॉक्टर अभिषेक बोस इस कृष्ण अभिषेक प्रभु, डॉक्टर केनेथ वालपे इस कृष्ण क्षेत्र स्वामी महाराज, डॉक्टर लुशियन वोंग इज ललित माधव प्रभु, डॉक्टर रवि गुप्ता इज राधिका रमन प्रभु, डॉक्टर डेविड हेबरमैन इज प्रेमदास प्रभु, डॉक्टर गोपाल गुप्ता इज गोपाल हरि प्रभु. So you can see so many devotee scholars, they from so many prominent universities across the world are coming together here in BRC. And then also in India, a lot of them, many of them are devotees or others are very favorable to us, who are working with us. These are our so many research assistants who are also working. At least 15 research assistants and few projects. Like this is a project on the architecture of Madan Mohan Temple in Vrindavan. 500 साल पहले जो आर्किटेक्चर था वो कैसा था, कैसे बना था, अंग्रेज मुसलमानों के राज था उस समय, अकबर राजा थे, कैसे उनके राज में वो बनाया गया, और फिर उसके बाद में आगे जाकर करौली और जयपुर में, फिर गोवर्धन इको विलेज इंडिया में आगे जाकर कैसे मदन मोहन टेम्पल फिर से बना, उसका आर्किटेक्चर का रिसर्च पे हम लोग एक बुक निकालेंगे। ऐसे ही कांचीपुरम एक पूरी सिटी है, उसमें सारे टेम्पल्स का हिस्ट्री, सारे टेम्पल्स के बारे में सब कुछ जानकारी के बारे में एक गाइड बुक पूरी निकलेगी, दैट विल बी कांचीपुरम। और आगे जाके हम और सिटीज में भी ऐसी एक टेम्पल्स के बारे में एक गाइड बुक पूरी निकालेंगे। हर एक टेम्पल के बारे में सारी चीजें होंगी, जैसे आप देख सकते हैं कौन कौन वहां पर सेंट्स जाते थे, क्या क्या वहाँ की हिस्ट्री है, क्या फेस्टिवल्स होते हैं, और क्या डीटीज हैं, क्या आर्किटेक्चर है, ये वो बहुत सारी चीजें जो होंगी सारी टेम्पल्स के बारे में बताई जाएगी। तो दिस विल बी लाइक ए टेम्पल गाइड बुक। ऐसे एक और रूप गोस्वामी की बुक है कृष्ण अभिषेक, जिसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कैसे होना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। ये रूप गोस्वामी ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर संस्कृत में, सिर्फ इस बार कि भगवान कृष्ण श्री कृष्ण का अभिषेक जन्माष्टमी पर कैसा होना चाहिए। तो वो किताब ट्रांसलेट नहीं हुई है, अब ट्रांसलेट होगी तो उस हिसाब से फिर हर एक मंदिर में इंक्लूडिंग कन्हैया देश में भी आप लोग उस हिसाब से फिर जन्माष्टमी के दिन अभिषेक कर सकते हैं। क्यों, अच्छा होगा। तो ये एक किताब भी आने वाली है। और फिर ऐसे ही वैष्णव एनसाइक्लोपीडिया एक बहुत बड़ी जो बताया था, उसमें हम लोग पहला काम कर रहे हैं जिसमें 1600 गौड़िया वैष्णव सेंट्स की बायोग्राफी होगी। 1600 गौड़िया वैष्णव सेंट्स की बायोग्राफी वैष्णव एनसाइक्लोपीडिया में आएगी। ऐसे एक और बुक है कृष्ण चैतन्य हिडन ट्रेजर ऑफ इंडिया। दिस वाज रिटन बाय ए जर्मन डिसाइपल ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सदानंद दास जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती जर्मन डिसाइपल थे, उन्होंने बुक लिखी थी, उसको हम लोग फिर से अब इंग्लिश में प्रिंट करके लेके आ रहे हैं। ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर डिसाइपल थे संविदानंद दास। 1935 में उन्होंने लंदन में एक पीएचडी की थी, लंदन में पीएचडी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऑर्डर पर, हिस्ट्री ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म पर लंदन में पीएचडी की थी। वो आप देख सकते हैं कितना उनका क्या विजन था। 1935 में लंदन में भेजा उन्होंने अपने डिसाइपल को पीएचडी करने के लिए हिस्ट्री ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म।
आप सोचिए 100 साल पहले भक्त पीएचडी कर रहे थे, आज मुश्किल से कोई पीएचडी कर रहा है। आज तो इस समय there should have been thousands and thousands of PhDs. Unfortunately वो नहीं है, तो इसलिए इस चीज को पूर्ति को, इस कमी को पूरा करना है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग करें, उल्टा डंगा जंक्शन रोड, और फिर सरस्वती जयश्री भक्ति सरस्वती ठाकुर की बायोग्राफी, उस पे वो बुक को भी ट्रांसलेट करके छापेंगे। उल्टा डंगा जंक्शन रोड हेडक्वार्टर्स था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़िया मठ का, उस वहाँ क्या क्या होता, उनकी पर्सनल डायरी जो आप देख रहे हैं उनकी पर्सनल डायरी है 1904 से 1936, उसको भी ट्रांसलेट करके उसका भी करेंगे। और हम लोग कुछ इंग्लिश के अलावा संस्कृत की एक बुक है ब्रज भक्ति विलास वृंदावन परिक्रमा के बारे में, उसको छापने वाले हैं। रामायण सुंदरकांड उसको हम लोग मराठी भाषा में छापेंगे, जो क्रिटिकल एडिशन है, मतलब एक्चुअल ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड को ट्रांसलेट करेंगे, आगे जाके और लैंग्वेजेस में भी करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर की ऑटोबायोग्राफी स्वलिखिता जीवनी को बंगाली में छापेंगे। और भागवत में जो डिस्क्रिप्शन है यूनिवर्स का, मैथमेटिकल एक्सपोजिशन ऑफ भागवत कॉस्मोलॉजी, उसको भी हम लोग छापेंगे। 5 बुक्स डीप स्टडी, प्रेम गौरांग प्रभु करके एक डिवोटी है जो पूरा भागवत की जो कॉस्मोलॉजी है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसको वो टीओवीपी के में प्लेनेटोरियम के लीड है वो 5 बुक छापेंगे कॉस्मोलॉजी के बारे में। तो ये भी एक बहुत बड़ा important publication आने वाला है। 5 books will be published like this. And then philosophical counseling based on Bhagavad Puran is another. Counseling करें भागवत पुराण के basis पर in collaboration with American Institute of Philosophical Counseling. फिर हम लोग IIT कानपुर के वेबसाइट पर भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर भगवत गीता एज इट इज के कॉन्सेप्ट मैप, एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैप भी डाल रहा है ऑनलाइन। ये एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की गीता सुपर साइट पर डाल रहे हैं। ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज में एनुअल रिपोर्ट में भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर के काफी प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन किया गया है, जो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स जो हमारे स्कॉलर्स ने लिखे हैं उनको भी मार्क किया ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडी में। हम लोग ने एटलीस्ट 25 पार्टनर्स के साथ 31 कॉन्फ्रेंसेज 103 स्पीकर्स के साथ में लास्ट 4 सालों में किए, और ये सारे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज हैं। और फाइनली हम लोग मास्टर्स और पीएचडी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, इंडिया में हार्डली कोई कॉलेजेस 0.33% कॉलेजेस रिलीजियस स्टडीज करते हैं, और उसमें भी हिंदुइज्म की स्टडी बहुत ही कम है। अमेरिका में 20% कॉलेजेस करते हैं रिलीजियस स्टडीज एज कंपेयर टू दैट। सो सेक्युलरिज्म शुड मीन स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन, नॉट स्टडी ऑफ नो रिलीजन। सेक्युलरिज्म का अर्थ है सारे धर्मों की स्टडी हो, पीएचडी, मास्टर्स, डिप्लोमा कोर्सेज, ये सारी चीजें हो, तो सब तरीके के सब्जेक्ट हो, वेदास के बेसिस पर एंटरप्रेन्योरशिप, एफिशिएंसी, एथिक्स, एनवायरनमेंट, इमोशंस, इन सब चीजों को स्टडी किया जाए, बट वेदों के बेसिस पर, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, तो इन सब पे कोर्सेज, स्पिरिचुअल आर्ट्स एंड साइंसेस पे कोर्सेज, ये सारी चीजों को भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर लेके आना चाहते हैं। हमने बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं ऑलरेडी बाय डिफरेंट फैकल्टी अक्रॉस द वर्ल्ड दैट यू कैन सी हियर। ये हमारे फैकल्टी हैं, ये हमारे पीएचडी एडवाइजर्स हैं। Some people are already doing PhD either on Bhakti Rasamrit Sindhu और Bhakti Ratnakar, या फिर लीडरशिप, आध्यात्मिक लीडरशिप based on decision making in modern age businesses. ये multiple PhDs are currently in progress at the Bhakti Vedanta Research Center. So many people are doing masters, including Gauranga Prabhu himself. And so that's what we request, that based on all of these, we request you also to kindly participate in this. Before we take you to the tour, I will briefly also tell you how you could, if you are willing to, you could participate in procurement and preservation. आप बुक्स, अगर आपको पता है जो लोग बुक्स दे सकते हैं हमें, तो हमें बुक्स दीजिए। अगर आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, पब्लिकेशंस में आपको कोई भी जानकारी है, एक्सपीरियंस है, तो हमें हमसे कनेक्ट करें, बिकॉज हमें लाइब्रेरी, पब्लिकेशंस, बुक्स के बारे में बहुत कुछ करना है। अगर आप एकेडमिक स्टडीज पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमसे कनेक्ट करें, तो शायद हम आपको कोर्सेज, ये वो अलग अलग चीजों में, मास्टर्स, पीएचडी, ये वो चीजों में हम आपको इन्वॉल्व करेंगे। और सोशल मीडिया में आप हमको कनेक्ट करवा सकते हैं। आप अलग अलग कुवैत लोकल कन्हैया देश के लोकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ways that you can donate to us, that I will tell you also, project management, technology, so many other ways. So you can, आप अगर हेल्प करना चाहें हमें कोई भी इस चीज में, लाइब्रेरी में, मैन्युस्क्रिप्ट मिशन में, एग्जिबिट्स करने में, और या बुक्स पब्लिश करने में, एकेडमिक्स में, स्कॉलरशिप में, रिसर्च करने में, शास्त्रों की जैसे भी सेवा करना चाहें,
बहुत सारे तरीके हैं. अगर आप पेट्रन बनना चाहेंगे तो हमारे पास ये पेट्रन स्कीम्स हैं, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, starting with $11,000 to $6,000 to $2,500. These are US dollars, 1,001. And based on this, आप अलग अलग लाइब्रेरी सेक्शंस, जैसे लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शंस है, वो आपके कोई भी फैमिली या फ्रेंड्स के नाम पर हम लाइब्रेरी सेक्शंस कर सकते हैं कि आपने इन सेक्शंस को अडॉप्ट किया. तो व्यक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर के लाइब्रेरी के एक सेक्शन को आप अडॉप्ट कर सकते हैं जो आपके माता पिता, आपके स्वयं के नाम पर या किसी भी के नाम पर आप कर सकते हैं. आप चेयर, एंडाउमेंट, स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि बीआरसी जो कुछ भी कर रहा है, हमें कोई भी एक चीज में कोई भी लक्ष्मी नहीं मिलती, बिल्कुल भी. वी आर नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ एनीथिंग व्हिच विल गिव अस लक्ष्मी. हम लोग ये सब कुछ डोनेशंस के बेसिस पे चलता है. So whatever way, if you would like to participate in any way, please be most welcome. Museum exhibits, research projects को आप स्पॉन्सर करना चाहें, publications, अगर आप चाहते हैं हेल्प करें कि हम लोग अलग अलग गांवों में जाकर मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करें, क्योंकि हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स खो रहे हैं at this point. So all of these things we can acknowledge you like that. And we obviously provide you acknowledgements, copies of our publications, personalized updates. बीआरसी गेस्ट हाउस में आकर रहिए, जैसे कि असीमानंद प्रभु रहे थे. बीआरसी स्पेशल आपको एक कोलकाता टूर भी दिया जा सकता है, ये वो. और एक और स्कीम है छोटी वाली कि आप एक शास्त्र अडॉप्ट कर सकते हैं. अगर आप एक बुक को अडॉप्ट करते हैं तो इट कैन बी एज लेस एज 500 per month to 1,000, 1,100 to 2,500 a month, just for 500 a month, which may be only something like 2 KD, as I heard, because the KD is the highest, is the strongest currency in the whole world. So if you would like to sponsor, then in the book we will mention कि आपने इस, जैसे आप गाय को अडॉप्ट करते हैं, आप एक शास्त्र को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाय को भी जरूरत है सुरक्षा की और शास्त्र को भी जरूरत है सुरक्षा की. तो आपके नाम पर उस बुक में एक नोट डाला जाएगा कि आपने उसे अडॉप्ट किया, एंड द बुक विल, शास्त्र विल थैंक यू फॉर दैट, और हम लोग आपके वेबसाइट पे एक्नॉलेज करेंगे. So these are different ways. These are people who have adopted this. And finally, we have also obviously coming over the newsletter, and we will hear for a few minutes before I show you the library. आप सुनते हैं हम लोग कुछ भक्तों से, सीनियर आचार्य से, वो क्या कह रहे हैं बीआरसी के बारे में. I truly believe that what you're doing, BRC, is arguably the most important project currently in the world today. You've got your finger on a nuclear pile here, you know. You know, it's so powerful what you're doing. It's so powerful, and the ramifications are in so many areas, so many realms of activity and study and practical application. It's going to get overwhelming. Now we are in the office of the Vaishnava Abhidhan, Vaishnava Encyclopedia Project. And as you may see behind me, some of the more artful side of this project is being shown on the wall. The Chaitanya tree of Vaishnava Associates, which is a very important part of Bhaktivedanta research of the Encyclopedia Project. This is so extraordinarily important and beyond anything that I could dream of, what you've done so far. This is a massive undertaking, just like the TOVP, almost speechless, but at the same time, I'm so proud of you all that you made such efforts. For the Bhaktivedanta Research Center, I consider to be one of the most important projects in the world today. It's helping to preserve our sampradaya. It's a heartbeat of our movement, the Brihat Madanga, the preservation of literature and dissemination, especially in the universities and creating the encyclopedia. Let's ramp it up and help in any way that we can. With Balarama Lila, that whatever he's preparing for our Gaudiya history in this BRC is really, really
it's really, really helpful for all Gaudiya Vaishnava community. So I'm sure that all the Gaudiya previous Acharya, they'll be happy on Balarama Lila, as well as whoever are working here, so whoever are serving for everyone. It's a Sundar. Thank you very much. Hare Krishna. Bhaktivedanta Research Center is truly one of the most important holy places in all of the world. Where original You're able to hear this? of our most worshipful Prabhu, not very clear, very low. Okay, one second. Something is, I'm just wondering. Let me put it on YouTube. I'm just wondering why even I'm able to hear in less. Whereas it should have been. Treasured, restored, and kept for generations and generations of the future. I am deeply. You're not able to hear, right? We can hear, but it's very less volume. Once I'm not sure. Okay, let me just. I'll just share it again. In any way participated in making this wonderful project possible. Okay, so I think for some reason all of our acharyas sound is not coming out. Blessings. Okay, so I think, let me see. I'm not sure why. We will see if we can come back to this. Right now, we can just. I'll ask Sundar Gopal Prabhu. Maybe Sundar Gopal Prabhu, you can now. You can. I've stopped the share. Can you show the library? Sundar Gopal Prabhu. Sundar Gopal Prabhu. Sundar Prabhu, can you make him co-host, please? So he won't need to show the screen. You just can pin his video. Yes, actually, it was not allowing me to unmute. Yes. Okay, go ahead. No problem. I will just request everybody to just pin Sundar Gopal Prabhu so that you can see his video. So here, if you see, this is our library, the Bhaktivedanta Research Center, where we have all the rare artifacts. So here, if you see, this is our Bhagavad Gita in 57 languages. We have in 57 different languages, we have collected Bhagavad Gita, and it's in a chronological order. Can't see. And now on the top of that, if you see, are the Back to Godhead magazines from 1944 till 2015 we have. So all the Back to Godhead magazines. Now I will show you the section of Srila Prabhupada. So this used to be the very early Back to Godhead enrollment form during the 1950s from Allahabad. And this is a small donation which Mathura Mohan, they have given ₹25 to Srila Prabhupada for the Back to Godhead magazine in 1952. Then this is the Back to Godhead magazine, the very famous article, Truth and Beauty from 1958. This is the original one which we have. This is the Bhagavad Darshan, the Hindi form of the Back to Godhead magazine from 1953. Then this is a Spanish paper where they have covered Srila Prabhupada with his disciples doing Sankirtan
And these are the postcards. Several devotees have written to Srila Prabhupada when he was residing in Calcutta in the Sitakanta Banerjee Lane from 1949-1948. So if you can see Mr. Abhay Charan De, 6 Sitakanta Banerjee Lane, Calcutta. This is the original handwritten Bengali letter of Srila Prabhupada, which he wrote to Lalita Prasad Thakur, the youngest disciple of Bhaktivinoda Thakur. So this letter he wrote from Moscow on 21st of June 1971, where he's updating about his preaching activities in Russia, St. Petersburg, and other places. And this is another handwritten Bengali letter which he wrote to Lalita Prasad Thakur on 7th of August 1971 from Bury Place, London. This is the postcard. And this is the Juhu document, the Bombay Juhu document, where you can see the original signature of Srila Prabhupada. And this is the BBT library report from all over the world. Now we will move on to the section of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So first, here you can see the original handwritten diary of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur from 1904. So we have the diary from 1904 to 1936. So this used to be the daily diary entry of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. If you can see 2nd of January, Saturday, 1904. Original handwritten diary of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Then this was the first book was published from the Ultadanga Junction in 1926 in English, Vaishnavism Real and Apparent. This is the original copy of the Thakur Bhakti Vinod Research Institute with the names of the various devotees in which designations they have been given. And here you can see the academic degrees actually. Very interesting. Yes. You'll see the BA, MA. You'll see the academic degrees of the devotee. That means you can see 100 years back, Bhaktisiddhanta Thakur had that vision, not just start an academic research institute, but he was so, he knew it was so important to have people with the academic degree qualifications. So that is a critical part of the DRC Seva. And this is Navadvip Panjika. So when Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was 12 years old, Jagannath Das Babaji Maharaj instructed him to make a Vaishnava almanac, Vaishnava Panjika for the devotees. So then he later made this Navadvip Panjika, where the dates of the appearance and the disappearance of all the associates of Srila Chaitanya Mahaprabhu. And this is the original handwritten letter of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur on Ultadanga Junction letter pad. And this is the original signature of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, which is written Nitya Ashirvad Shri Siddhanta Saraswati, which means my eternal well-wisher. And then here we have the original last will of Bhaktivinoda Thakur. This was written a day before, if you see the date, 31st of December 1936 at 10:30 a.m. And on 1st of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and on 1st of January 1937 he passed away. So this is the last will, original last will of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Now we move to the section of Bhaktivinoda Thakur. So this is the handwritten Sharira Avidya Jal of Bhaktivinoda Thakur. Yeah, something which all the devotees have been saying every day a few times. This is the original one. When I saw this the first time, I was like, really? And this is the original handwritten Mahamantra of Bhaktivinoda Thakur.
And this is the original Gaur Arati, the original handwritten Gaur Arati. When Bhaktivinoda Thakur was residing in Swananda Sukhada Kunja, he was writing these kirtans. So this is the original Gaur Arati. If you see, Dakshine Nitai Chad was written first, and later he added the lines. Yeah, the Jai Jai Gaurachande is added later on. And then that's at the top. And the Narhari Hari Adi Kori is added later on with a mark saying that it should go some in between. And this is the original songbook, the entire songbook of Bhaktivinoda Thakur, the original handwritten songbook of Bhaktivinoda Thakur. And this is one original handwritten letter of Srila Bhaktivinoda Thakur, which he wrote to his youngest son, Lalita Prasad Thakur, in 1910. And if you see below, extreme bottom, it's his signature, Shri Bhakti Vinod. And this is the horoscope of Lalita Prasad Thakur, which Bhaktivinoda Thakur himself did. So this is all the handwriting of Srila Bhaktivinoda Thakur, the entire horoscope of Lalita Prasad Thakur. This is few pages of the original handwritten Navadvip Dham Mahatmya by Bhaktivinoda Thakur. And this is the signature of Bhaktivinoda Thakur, Kedarnath Datta Bhakti Vinod, 16th of February, 1895. And then this is the original known picture of Jagannath Das Babaji Maharaj, which was taken in the house of Bhaktivinoda Thakur at Bhakti Bhavan in Calcutta by a British photographer. This is the only known picture of Jagannath Das Babaji Maharaj, who would generally would not allow, but Bhaktivinoda Thakur specially arranged this picture to be taken by calling that photographer, actually. And then these are a few articles written by Bhaktivinoda Thakur called Thoughts on Popular Topics in English, which was published in 1871 on various newspapers, where he wrote about Orissa, the Atibaris, the Saragrahi Vaishnava poem, and also about the Jagannath temple in Puri. And this is the first page of Swalikitha Jivani, where Bhaktivinoda Thakur pasted his, it is an autobiography of Bhaktivinoda Thakur, which he himself wrote, and he pasted his picture on the first page with the signature. Here, Kedarnath Datta Bhakti Vinod, 21st of June, 1896. And now if you see, this is our Nadia Prakash collection. So this is the entire Nadia Prakash collection, which used to be the daily newspaper during the time of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur from 1927 to 1947. So we have 40,000 images here, all the 60 volumes. So this is one of the Nadia Prakash issue where you can see 8 pages of daily newspaper. He would publish, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would publish from Mayapur. The first page would comprise of all the world news. The second page, the spiritual news happening in Gaudiya Math, and then the spiritual articles. So if you see, this is Mahatma Gandhi in Yarwara jail. So all the worldly news they would publish on the first page. Then something happening in Spain. Yeah, so you can see the current news at that time is about Indian independence movement, World War II, and all that. So all that was actually captured in the first page. And then later will be news about Gaudiya Math developments and various books being published, and then spiritual, philosophical articles. Yes. And the last page with some advertisement. So 8 pages of daily newspaper from Mayapur he would publish. And this is, you can see this portion, this is Gaudiya. Gaudiya used to be the
weekly journal which Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would publish from Calcutta every Saturday from Calcutta Gaudiya Math, Bagh Bazaar, or from actually from Ulturanga Junction it started. So like 20 to 25 pages of pamphlet where all the associates, descriptions of the associates of Chaitanya Mahaprabhu, different festivals happening at Gaudiya Math, everything. So this is the first page of the Gaudiya Journal. 1923, if you see, 13th October 1923, and various spiritual articles. So every Saturday, Gaudiya would publish from Calcutta. And this is a very exciting thing I wanted to show you especially. This is a special issue published on the 60th Vyasa Puja of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur 1934. So one devotee wrote a Vyasa Puja offering in Arabic language, in Urdu, to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And now we move on to our manuscript collection. This is our manuscript museum, where you can see the first manuscript I would like to show you. The original handwriting of Chaitanya Mahaprabhu. So this is... You have to repeat that. Original handwriting of none other than Chaitanya Mahaprabhu. Hari Bol. Yes. So the bottom one. So if you see the bottom, the one in very small letters, this is the writing of Mahaprabhu, and the one in the big letters, this is the writing of Gadadhar Pandit. So this is the 10th canto of Srimad Bhagavatam, which we digitized in Gauranga Toll Mandir in Navadvip. So this is the original handwriting of Chaitanya Mahaprabhu with the handwriting of Gadadhar Pandit. So what Mahaprabhu has written is a Sridhar Swami's commentary here. And what the other Pandit is written here is the 10th canto. And obviously what you are seeing here is not the original palm leaf manuscript. That this is the original one is written on a palm leaf. Yes, if you see here, the original one is written on a palm leaf, and we have digitized it and embossed it on a zinc plate. So the original one is worshipped in the glass box in Navadvip Gauranga Toll Mandir, if you see. And now this is Chaitanya Charitamrita, original Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami, which we have digitized from, a copy of the original Chaitanya Charitamrita, which we have digitized from Vrindavan. So what you are seeing here is the handwriting of Krishnadas Kaviraj Goswami. Hold your breath. Fasten your seat belts, let's say, as they say. This is the original handwriting of Krishnadas Kaviraj Goswami. The original lies in Badi Surma Kunj Vrindavan, but our team went there, we digitized it, and we preserved it for them, and then we took a digitized copy, and here what you're seeing here is a copy. And this one is Chaitanya Bhagavat. This is also a copy of the original one, which we have digitized from Badi Surma Kunj, handwriting of Vrindavan Das Thakur. This is Chaitanya Bhagavat. Yeah, and you can show that picture also of Badi of the Vrindavan. Yes, in Badi, so this is Premdas Shastri in Badi Surma Kunj. If you see inside that glass box, the original ones are kept. So we got the opportunity to digitize those originals. So it is Denur Bardwan in West Bengal, where it was written, and that's where it has been there for the last 500 plus years. Yes, and now these are the Gaudiya Vaishnava manuscripts, mainly Chaitanya Charitamrita, Adi, Madhya, and Anta, written on handmade paper and almost like 400-500 years old. And this one is Chaitanya Bhagavat, Adi, Madhya, Antya, written on handmade paper. These are also around 400-500 years old. Apart from that, this one is Chaitanya Chandramritam. And here we have Radha Rasa Manjari, a manuscript written on handmade paper. And here the famous
Tapta Kanchana Gaurangi, if you see, Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanusita Devi, Pranamami Haripriya. This verse from Radha Ras Manjari. This is the original handwritten manuscript on handmade paper. This one is also around 500 to 600 years old. And these are the various predictions of Chaitanya Mahaprabhu's advent from different scriptures. These are the proofs. Here we have also some manuscripts preserved. And this is Bhagavad Gita in Urdu language with the Sanskrit verses inside. This it's around 100 years old, written in 1906, and it was donated to us by Ravanari Prabhu. So behind this Bhagavad Gita, there was another book in Urdu, which we later have come to know. It's about Vishan Bhakti, means devotion to Sri Vishnu, written in Urdu. Now I take you to the entire library collection of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, which starts from here. You see, this is the Chaitanya Bhagavat. So this is a total of about 2380 books and 70,000 plus pages of journals here in the original library. So many of these books are personally touched by, obviously touched and studied by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So this is really a secret temple. These are books on Rupa Goswami. Yeah. So mostly the books are very rare, and most of them are 150 to 200 years old and out of print. Krishnadas Kaviraj Goswami section, Vishwanath Chakravarti Thakur section, Prabodhananda Saraswati, Narahari Chakravarti, and Narottam Das Thakur, Sanatan Goswami, Srimad Bhagavatam of different editions. And these are the press copies with the corrections of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, the original Srimad Bhagavatam with the editings of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. These are Srimad Bhagavatam, very, very old collection and editions, which Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would collect for his research purpose. This is the Mahabharat section. This is the Bhagavad Gita section. These are several Puranas. And these are Vishwakosh, encyclopedia. This is the Jiva Goswami collection section. Baladev Vidyabhushan. Several books on Upanishad, Vedas, Vedanta Sutra. So these are books on Hari Bhajan, books on Harinam, books on Hari Dham, and books on Hari Bhaktagan. And here we have books on 4 Sampradayas: Sri Sampradaya, Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya, and Kumar Sampradaya. And these are some English books from the collection of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So this is the entire section of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's personal collection. And now here we have
adopt a Shastra. So this is where you can actually sponsor a book from the collection of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and this is a board where all the papers with the names of the books are written. So if you want, you can choose one, and that book will be taken care by you with a certificate we provide with your name. So here ends the tour of the library. Obviously, there are many more books in the library. You see on the left side, a lot of books on Upanishads, Ramayana, Mahabharata, other than Bhaktisiddhanta Swami Thakur's collection also, yes, which is there. So there are many things with a limited time, but this is just to show you the library has about 25,000 plus books of various different aspects of Vedic knowledge, and even some of from other religious traditions, including we have Islam. books on different religions as well: Christianity, Buddhism, Zoroastrianism, Islam, Sikhism. Yeah, so there are many like that. Yep. So this essentially completes some tour of the Bhaktivedanta Research Center library. We are open for any questions, comments, etc., and all of that. And as he said, if you would like to anyway participate, contribute to any of these seva to serve our shastras, then kindly let us know. And we are here. Now it's time for us to hear from you. So thank you so much, Prabhu. Balarama Lila Prabhu and Sundar Gopal Prabhuji, we are very, very grateful. It was such a wonderful, very overwhelming experience, Prabhuji. तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इतना हमको अपना विशेष रूप से जो हम बोलते हैं कि जैसे हमारे पिताजी नहीं सिर्फ दादा परदादा, उनका जो धरोहर है वो सब देखने को मिला हम आध्यात्मिक जगत का. हम बहुत ही आभारी हैं प्रभु के और entire BRC team, and we can also realize that what kind of the entire efforts and have gone into this. It's such a massive task. इतना सुंदर रूप से सेवा हुई है और जो दिखने में आ रहा है हम सबको. And Asiman Krishna Prabhu also shared his own experience when he was there actually. So it's very, very overwhelming, and we all are inspired actually to visit the place. और प्रभु जी जैसे आपने बताया कि निश्चित रूप से हम लोग यहाँ से कन्या देश से सेवा करना चाहेंगे. और अभी भी हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ लक्ष्मी एकत्रित की है सेवा के लिए. And I requested Aradha Bhagwan Prabhu, so once we get the account details, we'll send directly Lakshmi there. और भी हम लोग सबको इंस्पायर करेंगे, जैसे आपने बताया कि अडॉप्ट करने के लिए, जैसे आपने बहुत सुंदर बताया आपने कि शास्त्र और गाय की रक्षा, जो जानते हैं शास्त्र के महत्व को प्रभुपाद की कृपा से, अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे. तो प्रभुपाद जी कृपा समझ पा रहे हैं शास्त्रों के जो उनका महत्वपूर्ण योगदान है हम सबके जीवन में श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों से, और उनका भी जो आधार है, उनको हम आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इस धरोहर को बचा के रखना, ये बहुत ही पूजनीय कार्य हो रहा है. हम सब बहुत ही आभारी उन सभी भक्तों के. एंड डेफिनेटली दिस विजन itself is such a glorious vision actually. I was just thinking it's not only ISKCON, the entire Gaudiya samudaya, not only Gaudiya samudaya, although Vaishnavas community, सबको ये बहुत ही गर्व महसूस होगा ये देख करके कि कैसे शास्त्रों की यहाँ पर उनको संजोग के रखा जा रहा है. तो ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का अनुभूति हो रहा है प्रभु जी. तो I'm very, very grateful to Balarama Lila Prabhu ji and Sundar Gopal Prabhu and the entire team of BRC. We're extremely grateful. And obviously, everybody is most welcome. आप लोग आइए. कलकत्ता में असीमानंद प्रभु ने already एक example set up कर दिया है. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. So we have planned, Prabhu ji. We have planned for our yatra from Kanyadesh. Will be Kolkata, and then we'll go to Mayapur. So that we have planned like that. और बीच में भी भक्त आते रहेंगे, but पूरी यात्रा हम लोग लेके आने वाले हैं यहाँ से, and we'll definitely be in touch. Oh, that's wonderful. Yeah. Yes. Anybody else would like to share anything? Whatever, anything would. मैं तो काफी समय बोलता रहा, लेकिन सुनना, भक्तों से सुनने, क्या कहते हैं, श्रवण और कीर्तन दोनों होना चाहिए. तो आप हमारा भी कुछ श्रवण हो जाए,
And then especially आप लोग कई लोगों के कुछ thoughts होंगे, suggestions होंगे, or any other way, whatever we would like, anything you would like to share, we are very happy to hear.